yeah, definitely it feels थोड़ा बुरा तो लगता ही है कि मतलब, पर you can't just go and justify this to each and every single person who's commenting on your post. So yeah, it's not like कि मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए उस पोस्ट पे से, या मैं एक एक को देखने गई हूँ या डिलीट कर रही हूँ. I did not do anything. I try not to यार, I try not to look at those DMs for my own mental peace, because at the end of the day I have to work still in this industry and I have to keep working. So the Sayyara love is only going to help. Because people now believe that if we see authentic love stories, we'll come to support you. Have you watched the film? But as you mentioned, they're debutants. You know, people are seeing them for the first time on a big screen. For us, we are faces which you have seen. I love someone, and it has always been that one person. I was lucky enough कि मैं को एक बार में समझ में आ गया शायद, and I fell in love with that. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. They are getting back love in the air and I love it. The wonderful Avneet and Shantanu joining me. yeah. मजा तो आ रहा है. Yeah. We're getting back the love in the air. Yeah. है कि नहीं? Absolutely. We've grown up on such fantastic films, yaar. Yes. But for a while, sadly, we have been very disappointed for not getting love stories. But this year has It's all about love, girl. It's all about love, and we're going to talk a lot about love as well. Yes. But I'm going to start with the very important question Okay. that happened in the trailer launch some time back. Yeah. Shantanu, why are you making all the single men, women feel bad by doing these cute things like proposing on stage and being all cutesy I and got so emotional? serious for a second. Well, full bass had come na. Very serious. Yeah. Why are you doing this? क्यों कर रहे हो आप? Practice मैंने किसी और के साथ किया, end मैंने अवनीत के साथ किया. या तो Propose सिर्फ अवनीत को किया. Don't lie now. हाँ? है कि नहीं? हाँ. But cute. क्या? कुछ सिंगल लोगों को बताना चाहोगे आपकी तरफ से कि कैसे रोमांस और कैसे प्यार करते हैं? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लव इन वियतनाम. So this is a moment that yeah. So it's a moment basically. It's a moment in the movie that where आपको proposal, मुझे I feel like proposals are best when they're not planned. You know, it's 100%. impromptu feeling that you get, and then creativity and you being in the moment are at the peakest, and then you just like say or feel. So वैसा ही कुछ moment था, तो उसमें उसका वैसा moment है कि he takes off his chain that he has always worn and then रिंग रियल था क्या? रिंग बनाया गया था ना, चेन से बनाया गया था ना. और बट कोई you know what, it doesn't matter, रिंग रियल हो या कुछ भी हो, it's the love. Yeah. It's the love that matters. यहाँ पे भी एक epic love story का एक जिक्र है. I think my favorite dialogue, sorry, because you're saying the dialogue. लैला मजनू वाला. नहीं. I think it's Avneet का जो dialogue है. If you could just. the last one. Yeah, the last one. I think it's beautiful. कि किसी का पहला प्यार बनना. कह दीजिए. Yeah. किसी का पहला प्यार होना बड़ी बात होती है, पर किसी का आखिरी प्यार होना वो सबसे बड़ी बात होती है. So, which is very deep, which is very relevant to any decade or any generation you say. So, it's so true. It's so true. So It I is think, true. yeah. पहला प्यार कैसा था आप लोग के लिए? It was cute. It was Innocent. It was pure. It was Very young, yeah. like early teens. Yeah, I mean, I don't know. I feel like I thought it was a major crush, and then I realized it was, maybe we think that is only love, na? Yeah, initially, yeah. मेरे को भी पहले मैं उधर ही चली गई थी, पर फिर मुझे याद आया नहीं. वो तो one sided चल रहा था. Was it intense? उस समय पे जो feeling होता है वो बहुत सही होता है वैसे तो, because you feel like कुछ भी कर सकती हो दुनिया में, है ना? Have you felt that, and how is that feeling? Obviously, and I think it happens just once, yaar. So to actually feel that, like with all your heart and all your being, is so important, I feel, and to, है ना? But you know what, Avneet, as actors, you all get to at least Revisit, go back, revisit it. Yeah. And I feel like that is the only time you can do. Not everybody can do that. Real dil se. Hai na, Shantanu? Absolutely. What about you? Tell us about your first love. It has always been that, and I stick by it. Yeah. बताइए, एक लाइनर आंसर नहीं चलेंगे, कहानी चाहिए हमको. नहीं, कहानी नहीं, मतलब I will, I mean, I love someone, and it has always been that one person.
I was lucky enough कि मैं को एक बार में समझ में आ गया शायद, जी. and I fell in love with that, and I understand the intensity, I understand the depth of it, and वो धीरे धीरे समझ में आता है. And as you said, but yes, we are lucky that as actors, as artists, we get to do that multiple times with multiple individuals also, I would say, because आपके अलग अलग कास्ट के साथ होता है, and अलग अलग fantasies के साथ होता है, you know, because every writer has its own fantasy, and you get to live it, you get to play it, so that's beautiful. Yeah. But do you know when you fell in love? I want to understand that. How was yours? डिपेंड करता है यार, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पीपल टू पीपल. समटाइम इट्स वेरी, फिल्म में भी जो हम दिखाते हैं वो एक्चुअली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होता है, राइट? आई मीन येस, वी मेक इट लार्जर देन लाइफ, बट या आई गेट योर पॉइंट, एंड आई विल कम टू दैट कि दैट रियलाइजेशन मोमेंट, आई वाज वेरी पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ to make sure कि if it's a like phase or it's a love phase. Correct. That's exactly what I was. Yeah, because अब luckily मैंने कोई मूवी देखी थी जिसमें डायलॉग था. Yeah, कि पूरी दुनिया मूवी से कनेक्टेड है. हाँ, मतलब कि I swear. मतलब like phase अलग होता है, love अलग होता है. बिल्कुल. And like can go on, but love, once you commit it, then it's a commitment. So true. Yeah. So that's हमारा green flag. No, that's when I for me that gave me that clarity. Commitment. कि if it's love or it's like a like, or as you said, crush. जी. So and when I kind of tried to dig more into it, and I realized that नहीं यार, ये मेरे को love है. कितनी प्यारी बातें करते हैं. है ना, बताओ. This is such a big film for both of you. Yeah. Yeah. Again, Yeah. both of you have come from TV to a world, made your mark here. Individually, you guys are doing so great, but you always want that one film where we can do it, give it all. I feel like this film is that for both of you. Yeah. And also having this film go to Cannes, Yeah. get it look unveiled there. Matlab, yaar, it's like a dream come true, isn't it? Yeah, definitely it's a dream project for sure, and there are so many things that we already have, you know, achieved in terms of that, and I'm just so happy that सब लोगों की मेहनत actually इस फिल्म पे निखर के आ रही है सब लोगों की, and कहानी भी बहुत अच्छी है. बस हम चाहते हैं कि ऑडियंस को कनेक्ट हो कहानी, और जैसे कि ऑडियंस अभी बहुत रोमांटिक फिल्म्स के मूड में आ ही चुकी है, तो व्हाई नॉट हमारी भी फिल्म देखें जाके. I'm going to come to you for your answer because you mentioned that Yeah. the Sayyara love is only going to help. Because people now believe that if we see authentic love stories, we'll come to support you. Have you watched the film, and does this also give you hope that, yaar, you know, we're also trying to give like authentic love stories, so there is hope and there's space for love I stories. haven't seen Sayyara. I'm so Okay. sorry. Okay. I have watched it. Yeah. What do you think of it? I liked it. It's nice. I love the music. The songs are really nice, and yeah. But doesn't this give you hope? क्योंकि there was a phase जहाँ पे सिर्फ action films को उस तरह का numbers दिखे. When you see a film with debutants, you know, they always hope that you have the biggest stars and then you have the box office numbers. But this film changes the game in the sense, like if you give authentic stories, it works. See, it has both aspect to it, to be honest, and not trying to be over analytical about it, but Sure. it is just there. Yes, it's lovely to see that audience are looking for love stories and they are accepting authentic Bilkul, and bilkul. fresh love stories and fresh take on love stories. But as you mentioned, they're debutantes. You know, people are seeing them for the first time on a big screen. For us, we are faces which you have seen. So we have an added pressure कि अगर उन्होंने कर दिया है तो आपको तो करना चाहिए. You know, so I'm okay to take that pressure also. It's nothing got to do with that. But it's just that, as I keep saying, and Avneet also by now has said that कि come give us that chance and then decide. Sure. Is what I say. So Yeah. it's very important for us when everyone is saying, like, you know, they are looking for fresh faces. We have also got this opportunity, and we do consider ourselves as fresh faces, and we just want those opportunity कि लोग आए theatre में आए देखें, then make their judgment rather than before कि whatever हमारे से उनको past कोई grudge हुआ या फिर कोई love है कि उसके हिसाब से कुछ सोच के ऐसा कि अपना कुछ बना करके ऐसा होगा. You gave that movie a chance. जी, हमको- That is what आपको। we want. That Yeah. is all I'm saying. And yeah. बात करते हैं going to Cannes. Yeah. With a film like this, it's a massive
day for, it was a massive day for both of you. Absolutely. Yeah, it is. I think the best part was I went with my work and not just went there for attendance or for sake of it. No offense to anyone, Yeah. but I always want to travel with my work. Places like this because I feel वो एक अलग वेटेज आता है, एक अलग वट आता है, as they say in Mumbai. बिल्कुल. एक हमारा वट है कि हम लोग अपनी मूवी के लिए गए, हम लोग ऐसे घूमने के लिए नहीं गए थे और वहाँ पे चले गए. Again saying no offense to anyone, each to its own, but I felt like that, and that for me was a very proud moment कि I'm going there with my work. Yeah. Yeah, definitely. Like we launched our poster there at the Bharat Pavilion Yeah, and all of yeah. that, and so that was really, really special. I mean, for me and for Shantanu as well. Yeah. He said a very important thing, that you were traveling with the film. Yeah. But because you have so much of fan following on social media, along with the love, you also get the breakback. Yeah. And you saw that a lot during Cannes, because you were living your happy moment, doing that little touching the ground, saying hello to everybody and living your moment. But people were questioning you as well, right? Saying that does she deserve to go there, or do influencers supposed to go there? But he made a point here, saying that but we were there for our film. Exactly. Yeah. How did you deal with that entire thing? Because it was a happy moment, but then you come back to so much criticism. See, मुझे ये जानना है कि अवनीत उस समय पे उस सिचुएशन को कैसे डील करती है? See, it was a very initial stage. अब तो फिल्म आ चुकी है और मतलब आ रही है, सबको पता है इस फिल्म के बारे में, काफ़ी लोगों को पता चल गया है. उस टाइम पे लोगों को उतना नहीं पता था कि मतलब लव इन वियतनाम का हम लोग पोस्टर लॉन्च करने गए थे और हमारी फिल्म के साथ गए थे. और उस टाइम पे एक्चुअली आई फील बहुत सारे लोग भी आए थे उस टाइम पे. लाइक दिस वाज आई थिंक द ईयर दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैड स्टार्टेड लाइक कमिंग. सो आई थिंक A lot of influencers were coming and stuff. या एंड कहीं ना कहीं कुछ पता नहीं, शायद कुछ मिसकंसेप्शन हो गया लोगों को, या पता नहीं लोगों को शायद लगा. पर आई हैड ऑलरेडी लाइक मेंशन्ड बिफोर ट्रैवलिंग ओनली कि यू नो वी आर गोइंग फॉर आवर फिल्म, and obviously it's a really big day for all of us, for the whole team. So yeah, definitely it feels थोड़ा बुरा तो लगता ही है कि मतलब, पर you can't just go and justify this to each and every single person who's commenting on your post. So yeah, it's not like मैंने comments off कर दिए उस post पे से, या मैं एक एक को देखने गई हूँ या delete कर रही हूँ. I did not do anything. I have received a lot of love and blessings for this film, and I am looking forward to that only, not this. Yeah. Because you said this, I definitely want to bring up that, again, I see Avneet living her life, dancing, doing what she makes happy, you know, and you're, both of you, I mean, both of you are fantastic dancers, and Shantanu also, we know what he can do on stage. But you're living your life, dancing, doing transition reels, wearing clothes, looking hot, owning your sexuality and doing what you want to do. Yeah. But people who are coming to your feed particularly to analyze that, comment on what you're doing. I am 100% sure they go to your DMs to write some creepy way of hitting on you. You know, I'm sure all that is happening. But they will come publicly and write like nonsense. But the other point that I want to say is that you give so much hate to female content creators who are living their lives like Right. you. Where is the maximum engagement coming from on your feeds? From men, right? It's really frustrating, honestly. It's really गुस्सा भी आता होगा ना अभी? bothers me, obviously, and I'm sure like it would bother any girl, यार, in that way. But पर करते क्या हो अपने? क्या It's- करूँ मैं क्या बोलूँ आपको? I can't even say such is life because it shouldn't be. It shouldn't be like that. But Have you got really horrible comments in DMs? oh my god, I don't check my DMs. You stopped it? Yeah. I've stopped it. I think in 2000. I don't even remember. Like I think 2 years back, I have stopped it. Something happened, and Some horrible comment again. some ऐसा ही कुछ some scene would have happened. I don't even remember this anymore. But I just made a point. I was like, कोई भी किसी का भी DM भी आता है. I don't check DMs only. It's not like from like that, but I
I try not to. I do accept DMs when like my fans. We have like those groups of like my fans are जी, there. On, yeah. I have like a broadcast channel also where like I can talk to my fans and Correct. everything. And if they say कि हाँ मतलब किसी से बात करनी है या you know she's a really big fan, is a huge fan, I reply to them and everything. But I try not to, yaar. I try not to look at those DMs for my own mental peace. Because at the end of the day, I have to work still in Yeah. this industry and I have to keep working. So that's how I deal with Do you it. hold back from comments that you see as well? But there are so many of them, man. It's not like one or two. ना कितने होते हैं? मतलब कितने ऐसे फालतू ये कमेंट घटिया कमेंट Yeah, so I just try to look at the positive side of it. Like, try to do that. That's what I have to do. या तो फिर आप खुद को ही परेशान कर रहे हो ना, आप क्या करोगे? You have to keep your mental peace also ना. What to do? I'm sure being her colleague and stuff, you've seen her. You know. I think she's a very. People forget she's still young, you know, and you. Though she's mentally very strong, but yeah, I mean, she has an amazing way of dealing with things, and yeah, kudos to her, hats off to her, and more power to her. But I must ask. लोग कहते हैं प्यार में कुछ भी हो कर सकते हैं लोग, right? And you see that in the trailer, there is pain. You know, Yeah. we see the both reacting. Of course, there'll be those moments. I want to know what is the craziest thing that you've done in love. Done in love. Yeah. Oof. Craziest. I've done really cute stuff, yaar. I don't know about crazy ठीक है, yet. it can be. I Yeah. was gonna say I never got into a relationship. अभी आपने बोला. Oh, just I said I was in love. I never said I had a relationship. See, there's again like love, relationship, love. It's a different. We refuse. guys, अभी these Avneet. storms are driving me crazy. Yeah, see, यार, why you be अभी green flag बोला? You said you're committed to her, यार. but I never. एक second. Did I say I'm in a relationship? I'm in relationship with that person. Did I say ये that? एक तरफा प्यार है क्या? Exactly. That can also happen. आप अरे यार. आपके साथ नहीं हो सकता है. I think he's too nice to the other girl. How? है ना Avneet? We ऐसे also कैसे? ऐसे नहीं हो सकता. exactly. You're See, bluffing here. Yeah. Okay. Fine. exactly. I don't know. what to say. Exactly. No, it's okay. It's fine. But I'm saying that हाँ बताइए. It can be cute also. See, your idea of cute. Okay, चलो, not crazy. Tell us what's the like your standard का crazy in love that you've done or someone's done Like for you. मेरे स्टैंडर्ड का कुछ भी हो सकता है ना फिर. हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं? I've traveled alone. So Oh, I don't usually. I always travel with someone. I have thoda anxiety that way. हाँ. But I traveled alone once for that person. But this is cute. On a really long flight. Oh wow. But that is cute, That's sweet, yeah. that's sweet. Overcoming fears is a part of doing something crazy for है ना? love. Yeah. A comfort Love zone makes के you बाहर. do that. Yeah. आपको तो पता ही होगा. Yeah. यार, आप बोल ही दो. ये बोल ही दो. Yeah. बोल दो, बोल It's दो. like yeah. What is this? But कभी दिया नहीं ना मैंने. पर लिखा है. हाँ लिखते तो हैं. एक तरफा प्यार. ताकत. Seriously, what is Yeah, this? yeah. नहीं, यहाँ पे तो I hope नहीं, यहाँ पे तो दो तरफा ही है. In the film it is दो तरफा. I'm sure in real life world is दो तरफा. आप सब सोचो. झूठ है ये my lord. आप सस्पेक्ट करो. Suspect करो. But no, we are happy for you. I think it's lovely that we get to celebrate love and talk about loving. I think it's a Yeah. beautiful Yeah. feeling. Yeah. Love it. I feel yeah. Before I wrap, let me do something fun. Absolutely. Yeah. All right. इतनी प्यार व्यार की बातें कर रहे हैं, है ना? तो आइकॉनिक फिल्म्स के मैं डायलॉग्स बोलूंगी. Oh my god. आपको I बताना think ये है अवनीत बेटर होगी मुझसे. कि ये कौन से फिल्म की है. बहुत इजी है. हाँ तो बहुत easy है तो फिर ठीक है. Damn. ऐसा करना है. Okay. Wait, 1 second. Let me just prepare my mind. Okay, I'm ready. रोमांटिक फिल्म्स की बात हो रही है तो हम करने वाले हैं कुछ डायलॉग्स और इनको गेस करना है कौन सी फिल्म का है. ओके, लेट्स गो. आर यू रेडी? Yeah. अभी yeah. हाथ उठाना पड़े. फर्स्ट डायलॉग. तुम्हें देखने के लिए मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकती हूँ. इसने उठाया. लास्ट देन आई विल मूव ऑन. तुम्हें देखने के लिए मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकती ओके आप हिंट दो ना. हाँ, किस कुछ तो हीरोइन यार, किसने हीरोइन कौन सी हीरोइन ने बोला है? पहले की ऋतिक रोशन. कभी कहो ना प्यार है. कहो ना प्यार. कहो ना प्यार है. ये आइकॉनिक डायलॉग है उनका. आइकॉनिक डायलॉग मतलब फिल्म तो आइकॉनिक है. अरे यार तो आइकॉनिक डायलॉग भी तो बोलोगे ना. ऐसे फिल्म में कोई भी डायलॉग उठा के बोलोगे तो अमीषा पटेल says like this only in that अच्छा, tone. I अब जाके रीवॉच करना. मुझे तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो? Trauma. I got trauma from not reciting that
डायलॉग I was like, why is she तो said But कि she says it romantic like film. ये romantic film का ही dialogue है Oh वह my God. Amisha Patel says this to Hrithik Cool, so I get Roshan the point, right? Got it. ये सबसे बड़ा हिंट था This is not given to you Yeah, this Why, is why, given why? to none of us. What is this यार, ये क्या है? Hint, ये क्या है? hint, चल ठीक है, okay. He's like so cute क्या हाँ बोलूं चल मैं? ठीक है ये तो पता ही नहीं था. ये बहुत इजी है बहुत लंबा भी है ये डायलॉग दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं कुछ रिश्ते जो हम समझते हैं नहीं कुछ रिश्ते जो हम समझाना नहीं चाहते हैं कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता सिर्फ एहसास होता है कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती सरहद नहीं होती ऐसे रिश्ते जो हो गया बहुत लंबा बोल दिया आप कर लो आप ही बोल रहे हो कि हमको कुछ समझ में बोलो कौन सा डायलॉग है नहीं होती हमें कोई सरहद. आइडिया नहीं है दीवार या सरहद तो नहीं मूवी का नाम कोई. आई कांट बिलीव दिस वेरी आई डोंट नो क्या बोला आपने रेफ्यूजी बॉर्डर. ये उतनी नहीं है SR क्या है चलो हिंट दिया अब नहीं दूंगी मैं हाँ सरहद नहीं होती, जब दीवार. तक है जा हाँ. पोएटिक वैसे ही था नहीं वीर ज़ारा No. कभी खुशी कभी गम कब अरे बोलते यार हैं ये कब बोलते हैं? SR के says this to काजोल when वो पटा रहा होता है उसको अच्छा literally like दोस्ती के अलावा कुछ you isn't this very शाहरुख where he goes on saying that I was gonna say शाहरुख but then I was like ये सरहद कोई वरहद नहीं। कहाँ आ गई है अभी? चलो ये भी मैं आइकॉनिक नहीं है पर मूवी आइकॉनिक है अगेन अनदर हिंट Okay. जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता हे भगवान. गट्स यू हैव Is it जब वी मेट? नाइस एक हुआ किताब खुला चलो अच्छा विल कंसीडर हाफ हल्कन हाफ व्हाई हाफ बिकॉज मैंने ऐसे किया ऋतिक तो रोशन क्या का दोनों के लिए किया ना क्या उसका हाथ बढ़ गया थोड़ी क्या उसने भी तो देखा अच्छा खैर शांतनु आपको दिया 1-1 चलो ओके One. ओके प्यार तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर चमेली मैंने इन द बिगिनिंग आई सेड एपिक रोमांसेस आइकॉनिक अच्छा ओके हाँ बोलो प्यार तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो बाप रे बड़ा डीप सा डायलॉग है ये. राम नहीं बैड एस रवि कुमार you're going to so regret once you hear the movie that you said that it's so poles apart oh, that's also iconic Yeah, of course it's iconic. HR always yeah बट नहीं है ये बैड एस रवि कुमार इसका भी हिंट दो को नहीं इसके एक्सप्रेशन से आपको लग रहा है कि ये आसपास भी है चश्मिश चश्मे oh no if I say that then you will think of कल हो another ना film हो. that's it that's true सनम तेरी कसम नहीं बोल सकता था मैं तो चश्मे मैंने इसलिए बट शी गॉट इट सेम एग्जांपल आपने जो बोला ये वाला Exactly, वेल डन 2-1 चश्मे से आया थोड़ा. इश्क जो तूफानी दुनिया से बगावत कर जाए वो इश्क भरे दरबार में जो दुनिया से बाजीराव नहीं पद्मावत. बाजीराव मैंने बोला था. अगर ये गलत कर देता मैं एग्जैक्ट मैंने तो देखा भी आपकी तरफ मैंने इसलिए बोला पहले मैंने सोचा मैं बोल देती हूँ ओके ये पता कौन बोलता है? आई थिंक ये बोलता है ना इसमें. बताइए शांतनु जी कौन बोलता है ओके चलो द लास्ट वन चलो, मुझे ऐसा चलो। क्यों लग रहा है कि चलो तो दो हाँ दो है ना 2 चलो ठीक है. मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है हर मोड़ आसान नहीं होता हर मोड़ पर खुशी नहीं मिलती पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत के साथ क्यों छोड़े मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े कब की एरा की फिल्म है ये बताओ कुछ अलग हिंट ले रहा हूँ ना आइकॉनिक है आइकॉनिक तो मतलब सभी शोले भी ऐसा आइकॉनिक है तो रोमांटिक ही है ना. अब ध्यान से देखो आई नो ही विल गेट इट इमीडिएटली व्हेन आई डू डोंट दिस शो इट टू हिम. मोहब्बतें देखा आई टोल्ड यू मुझे लगा मोहब्बतें का डायलॉग है ऑनेस्टली मुझे लगा मोहब्बतें का डायलॉग है आया ये क्या है? वाइलन सी द फैक्ट दैट यार आई नो ही विल नो दैट्स व्हाई आई टोल्ड मुझे पता उसने उल्टे है हाथ से किया ना इसीलिए इसको या तो आपको मुझे लगता है दिलवाले के फैन हो ना इसलिए दिलवाले को लगे पीछे नहीं देखो मैं दिलवाले नहीं देखी मैंने मोहब्बतें देखी है. शी यार कोई नहीं अरे ही कम्स ना I know, शाहरुख. म्यूजिक टीचर ओके Not bad. जितनी प्यार है उनमें और जितने प्यार है मूवीज के लिए इसीलिए उन्होंने एक दूसरी लव स्टोरी में ही हिस्सा लिया टेल दैट योर लव फॉर लव स्टोरी सो मच दैट यू Yes. मेड लव इन वियतनाम दैट यू
gave them हाँ this way. बेसिकली या हम उनको लव स्टोरी से इतना प्यार इतना है कि प्यार हमने है। खुद ये जिम्मा उठाया, राज सर को उठाया जो हमारे डायरेक्टर है और बोला करना ही उनसे है। करवाया लव इन वियतनाम। So अब नेक्स्ट टाइम जब हम गेम खेलेंगे क्या पता आपकी मूवी का डायलॉग भी हो इसमें। और ये 100%. ओके मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, Thank मुझे you so बहुत much. बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर काइंड ऑफ चिलिंग विद अस, वी वर लिटरली चिलिंग Yeah, actually. Yeah, it was very chill convo. बट थैंक यू सो मच। आई एम रूटिंग फॉर द बोथ ऑफ यू। लाइक आई सेड, अभी तक तो समझ में आ गया होगा मुझे प्यार से प्यार है। यस And I- और आपका प्यार भी आपको मिल जाए, ये हमारा प्यार आपकी तरफ है। और आप भी रिलेशनशिप में हो ये बोल सको आप। अब आपने बोल दिया। मैं यार, बोल दिया बेचारे ने, भी बोल ये दिया। मैनिफेस्ट करता हूँ। Yeah. थैंक यू, आपकी दुआ की बहुत जरूरत है मुझे। We all just love. We all just love. On that note, thank you so much, guys. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।